Dear students, welcome back to this channel. Today's topic is minimum shift keying, that is MSK. Actually, minimum shift keying, that is MSK, is continuous phase shift keying. It is modified version of QPSK, that is quadrature phase shift keying, which we have already discussed. Major difference है QPSK में there is a sudden change in the phase shift, whereas in MSK we will prove later on that there is not sudden change in the phase, but there is a smooth change in the phase. In this section we will be studying transmitter sections, then receiver sections of MSK, as well as we will discuss how MSK causes smooth change in the phase shift. This is the block diagram of transmitter section of MSK. It consists of M1, that is multiplier 1. इसके लिए दो इनपुट्स है, एक है साइन ओमेगा सी टी, सेकंड कॉस ओमेगा टी. एक्चुअली ये जो नोटेशन है दिस इज ओमेगा, बट फॉर द सिंप्लिसिटी वी विल रीड इट एज ओहम. तो दो कैरियर सिग्नल अप्लाई किए M1 को. M1 इज मल्टीप्लायर 1. Then we are using two band pass filter. BPF stands for band pass filter. For band pass filter 1, center frequency is omega c plus ohm. For band pass filter 2, center frequency is omega c minus ohm. इसका मतलब है band pass filter 1 will pass the frequency related to omega c plus ohm, and BPF2, band pass filter 2, will pass the frequency which is centered or around omega c minus ohm. Then we are using one adder and one subtractor, and finally we are again using two multipliers M2 and M3. The output of these two multipliers is adder by using a suitable adder, and MSK signal is generated. From the exam point of view, we can expect the question like this. Draw the block diagram of MSK transmitter and write down the mathematical equation. So we will discuss this block diagram related to the mathematical equation. जैसे मैंने बताया M1 एक मल्टीप्लायर है जिसके लिए दो इनपुट्स अप्लाई किए, साइन ओमेगा सी टी, कॉस ओहम टी. सो आउटपुट ऑफ M1, यहाँ पे लिखता हूं मैं, आउटपुट ऑफ M1, दैट इज आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर 1, विल बी नेचुरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज. सो इट इज साइन ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओहम टी. This is the signal you will be getting at the output of multiplier. Now we have to make use of some mathematical identities to complete this mathematical part. So these are the two mathematical identities. Look at the formula. It is sin A cos B, which is 1/2 sin A plus B plus sin A minus B, and second formula is cos A sin B is 1/2 sin A plus B minus sin A minus B. Actually ये एक ही फॉर्मूला याद रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये मॉडिफाई करके ही सेकंड बनाया है. एनीवेज, टू जस्ट मेक द थिंग सिंपल, मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं. नाउ विल मेक यूज ऑफ दिस फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए कॉस बी. यहां पे देखो, ए मतलब दिस वैल्यू ओमेगा सी टी, बी मतलब वैल्यू ओहम टी. सो बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी आई कैन राइट दिस आउटपुट विल बी 1/2 in the bracket sin A plus B, that is omega c t plus ohm t, plus sin A minus B, that is omega c t minus ohm t. This is the output of multiplier M1, where I have made use of this trigonometric identity 1. So I got this equation. Now look at the band pass filter. Upper band pass filter is having center frequency omega c plus ohm. Lower band pass filter is having center frequency omega c minus ohm. Therefore, I will write it like this. Output of BPF, that is band pass filter 1. How to write this output? बहुत सिंपल है. इसका सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओम. इसका मतलब है ये जो इक्वेशन आउटपुट ऑफ M1 के लिए आया है, so I will be selecting only these values. So it is 1/2 sin omega c t plus ohm t. What does this mean? ये जो M1 है मतलब ये पूरा इक्वेशन हम लोग दोनों बैंड पास फिल्टर को अप्लाई कर रहे हैं, बट अपर बैंड पास फिल्टर विल पास द फ्रीक्वेंसी, विल पास द टर्म रिलेटेड टू ओमेगा सी प्लस ओहम
lower band pass filter will pass the term related to omega c minus ohm. इसमें पहला टर्म है ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी टी प्लस ओहम टी. सो ये टी कॉमन लेके हम ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा सी प्लस ओहम whatever. So output of band pass filter 1 will be the term containing omega c plus ohm. Similarly, output of band pass filter 2 that is BPF2 will be the term, देखो ये 1/2 कॉमन है, so it is 1/2 sin omega ct minus ohm t. This is output of band pass filter 2. अब देखो ये जो आउटपुट है, दिस आउटपुट ये मैंने यहां पे लिखा है 1/2 ओमेगा सी टी प्लस ओहम टी. एक्चुअली टी कॉमन लेके लिखा है. सेम थिंग आउटपुट ऑफ बीपीएफ2 इज 1/2 साइन ओमेगा सी माइनस ओहम, ये माइनस साइन है बीच में, माइनस ओहम and t is taken common, one and the same thing. These outputs of band pass filter are applied to adder and subtractor. Connections carefully देख लो. ये जो band pass filter 1 का output है, this is applied as one input to adder, whereas the same signal, ये वाला signal, this is applied as one input to the subtractor. लेकिन यहाँ पे plus sign है. If I am talking about only adder, देखो adder का output है, it is denoted by x of t. Output of subtractor is denoted by y of t. So if I am talking about output of adder, then I will generate the equation like this: x of t is equals to output of adder is denoted by x of t. For adder, what are the two inputs? एक है डायरेक्टली ये BPF1 बैंड पास फिल्टर 1 का आउटपुट, एंड सेकंड इज जैसे ये सिग्नल है, देखो ये वाला सिग्नल, दिस इज अगेन कनेक्टेड टू दिस एडर. मतलब इट इज एडिशन ऑफ आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर 1 एंड बैंड पास फिल्टर 2. सो x of t कैन बी रिटन एज 1/2 sin omega ct plus ohm t plus 1/2 sin omega ct minus ohm t. वेरी सिंपल. ये सिग्नल ये डायरेक्टली यहां से लेके दोनों जगह अप्लाई किया, एडर और सब्सट्रैक्टर को भी. वी आर टॉकिंग अबाउट एडर ओनली. तो ये एडर के लिए दो पॉजिटिव टर्मिनल है इनपुट साइड में. एक पॉजिटिव टर्मिनल यहां से आया है जिसका सिग्नल है 1/2 साइन ओमेगा सी माइनस ओहम टी. वही लिखा है मैंने 1/2 साइन ओमेगा सी टी माइनस ओहम टी. दूसरा ये डायरेक्टली अप्लाई किया है, सो इट इज 1/2 साइन ओमेगा सी टी प्लस ओहम टी. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. एज यूजुअल ये 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं. So if you take this common, you can again well make use of this identity. क्या फॉर्मूला है? sin a plus b plus sin a minus b. देखो अगर हमने 1/2 कॉमन लिया तो sin a plus b मतलब this term will be a, this term will be b. Similarly this is a, this is b. 1/2 कॉमन ले सकते हो. So sin a plus b plus sin a minus b. Outside the bracket is 1/2, so it is sin a cos b. So this can be written as it is sin a, that is sin omega c t into cos ohm t. This is the equation of x of t. Same way I have to write equation of y of t. Look at the diagram. Y of t is output of subtractor. सब्सट्रैक्टर के लिए दो इनपुट है, एक प्लस को अप्लाई किया, एक माइनस को अप्लाई किया. प्लस को जो इनपुट है इट इज आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर 1, मतलब ये वाला सिग्नल, ये वाला, दिस इज डायरेक्टली अप्लाइड टू प्लस टर्मिनल. माइनस को वी आर अप्लाइंग आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर 2 दैट इज बीपीएफ2, ये टर्मिनल माइनस को अप्लाई किया. सब्सट्रैक्टर का फंक्शन क्या होता है? प्लस का जो इनपुट है उससे माइनस का जो इनपुट है वो सब्सट्रैक्ट करना है. सो आउटपुट ऑफ सब्सट्रैक्टर y of t will be, again it is for the positive terminal, at the positive terminal output of band pass filter 1 is connected. So this is output of band pass filter 1, that is 1/2 sin omega ct plus ohm t minus, because this is a subtractor. What I said, plus sign को जो इनपुट कनेक्टेड है उससे माइनस साइन को दूसरा जो इनपुट कनेक्टेड है वो सब्ट्रैक्ट करना है. So it will be minus, second input is this minus 1/2, that is output of band pass filter 2, which is acting as second input to this minus terminal. So sin omega ct minus ohm t. Again same logic, this 1/2 can be taken common.
So we can make use of this second trigonometric identities. देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. इफ दिस इज द केस एंड अगेन इट इज मल्टीप्लाइड विथ 1/2, देन इट इज सेम एज cos a sin b. सेम लॉजिक वी विल अप्लाई. जैसे देखो, this term I will call it as a, this term b, so it is a plus b minus sin, again this is sin a minus b, and 1/2 can be taken common, so we can write equation of y of t as cos a sin b. Cos a means omega ct into sin b, that means sin ohm t. So these are the equations of x of t and y of t. Next we will calculate the output of this final adder. Look at the diagram. This x of t is applied to m2, that is multiplier 2. Another input to multiplier 2 is root ps b0 of t. Same way y of t is applied to multiplier m3. Another input to multiplier m3 is root ps be of t. Be of t means even, b0 of t is odd component of bit b of t. अब output of these two multipliers m2 and m3 are applied to the adder. So let us calculate the output of the adder. अब देखो ये जो सिग्नल है, I am talking about output of this adder. It is obtained by adding m2 and m3. I mean output of m2 and output of m3. m2 के लिए कनेक्शन देखो, x of t मल्टीप्लाइड विथ रूट 2 ps b0 ऑफ टी. x ऑफ टी मतलब ये ऑलरेडी हमने सिग्नल ऑब्टेन किया. ये सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं ले लेंगे, ये वाला यूज करेंगे ताकि ज्यादा सिंपल हो जाएगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट आउटपुट ऑफ एडर विच इज s ऑफ t, दैट इज फाइनल आउटपुट, ये वाला आउटपुट, विच इज this signal x of t is multiplied with this term. मतलब every term of x of t will be multiplied with root 2 ps b0 of t. Look at this equation. So I will write it like this: root 2 ps into b0 of t. ये स्क्वायर रूट सिर्फ ps तक ही है. रूट 2 ps b0 of t into पहला टर्म, ये वाला टर्म, into 1/2 sin ओमेगा ct प्लस ओहम टी प्लस सेकंड टर्म, ये वाला टर्म, अगेन इट इज मल्टीप्लाइड विद द सेम थिंग, रूट 2 ps b0 ऑफ टी इनटू सेकंड टर्म साइन ओमेगा ct माइनस ओहम टी. दिस इज output of m2. It is again added with output of m3. So I will write it like this, plus for m3 y of t is multiplied with, I mean every term of y of t will be multiplied with root 2 ps be of t. So it is root 2 ps be of t into 1/2, I am talking about this y of t term, 1/2 sin omega ct plus ओहम टी minus, this minus sign will be as it is, again it is multiplied with root 2 ps into 1/2 sin omega ct minus ohm t. So this is the final output of s of t. We have to further simplify this equation. Next, अब चार टर्म्स है, इससे ये टर्म कॉमन लेंगे, मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म हम लोग कॉमन लेंगे. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा ct प्लस ओहम टी. ये टर्म कॉमन लिया मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म से. सो इनसाइड द ब्रैकेट रूट 2 ps इंटू b0 ऑफ t इंटू 1/2, ये पहले टर्म से रिलेटेड आएगा. सेकंड टर्म प्लस रूट 2 ps be ऑफ t इंटू 1/2, और ये ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 1/2 मतलब b0/2, यहाँ पे by 2 लिखेंगे. So what I did, from first and third term I took sin omega ct plus ohm t common. Then same way from second and fourth term take this term common. So for second and fourth term I can write plus sin
ओमेगा सी टी माइनस ओहम टी, ये टर्म कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिखेंगे दिस टर्म रूट टू पी एस बी जीरो ऑफ टी। हाँ, यहाँ पे भी 1/2 एक टर्म होना चाहिए, सो बाय मिस्टेक ये रह गए हैं, इट इज 1/2 क्योंकि हर एक टर्म में 1/2 है। सो इनटू 1/2, दैट इज आई विल राइट इट लाइक दिस b0/2 प्लस 4 टर्म से भी कॉमन लेना है, 4 टर्म में माइनस साइन है, सो माइनस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म रूट टू पी एस इंटू, हाँ यहाँ पे 4 टर्म में, आई मीन 4 टर्म में बी ऑफ टी का भी टर्म है, वो भी रह गए हैं बी ऑफ टी, सो इंटू बी ऑफ टी अपॉन 2. So this is the equation which I got after taking the terms common, मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉमन लिया, सेकंड और फोर्थ कॉमन लिया, यहाँ पे बी ऑफ टी टर्म वाज रिमेनिंग, वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस मेक फ्यू एजम्पशंस, जैसे we'll assume the term like let ch of t is equals to b0 of t plus b of t upon 2 and cl of t is equals to b0 of t minus b of t upon 2. Same way again assume that also let omega ht is equals to omega ct plus ohm t and omega lt. ये assumed notation से just to make the thing simple, omega l is equals to omega ct minus ohm t, जैसे मैंने बताया ये just mathematical manipulation है just to simplify the equations. So this equation can be written as, ये term as it is रहेगा, look at the bracket term, it is root 2 ps b0 of t upon 2 plus root 2 ps b of t upon 2. अब इससे ये जो term है root 2 ps can be taken common, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा b0 of t plus b of t upon 2, but b0 of t plus b of t upon 2 is ch of t and omega ct, ये term omega ct plus ohm t, it is omega ht. So for this I can write omega ht. फिर से एक बार देख लो, ये root 2 ps can be taken common, ब्रैकेट में बचेगा b0 of t plus b of t upon 2 which is ch of t. ये जो टर्म है साइन के ब्रैकेट में ओमेगा सी टी प्लस ओहम टी, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा एच टी, सो आई विल राइट इट लाइक दिस साइन ओमेगा एच टी, इसके बदले में ओमेगा एच टी पुट किया इनटू रूट टू पी एस एज इट इज रूट टू पी एस इनटू, देखो ये रूट टू पी एस कॉमन लेंगे तो बी जीरो ऑफ टी प्लस बी ऑफ टी अपॉन 2, बी जीरो ऑफ टी प्लस बी ऑफ टी अपॉन 2 इज सी एच ऑफ टी. This is the simplified answer of first term of this equation. Second term sin omega ct minus ht, अब ये प्लस साइन है बीच में, प्लस साइन ओमेगा ct minus ओहम t, omega ct minus ohm t is omega lt, so I will write it like this sin omega lt into root 2 ps, again common like the first case, इससे root 2 ps common लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा b0 of t minus b of t upon 2, so it is b0 of t minus b of t upon 2 is cl of t, cl of t. So this is the final equation of the transmitter side, ये cl of t है, this is the final equation of transmitter section of MSK system. Next is block diagram of receiver section of MSK. We already discussed how to generate x of t and y of t. Receiver side में this transmitted signal s of t is applied at this point. Then we are using two multipliers. To the upper multiplier, second input, first input is this s of t signal which is generated from the transmitter section. Then second input to the upper multiplier is x of t. We already discussed this mathematical equation. Similarly, for the lower multiplier, the second input is y of t. Then we are using two integrators.
integrator 1 and integrator 2. Both the integrators will perform integration for the duration 2TB, where TB is the bit duration. Output of this integration is obtained by closing the switches S1 and S2. At S1 you will be getting B0 of T, that is odd part. At S2, output of this integrator 2, you will be getting even part, that is BE of T. Next we are taking samples of this B0 of T and BE of T, and we are storing the samples. This final switch S3, which is supposed to be closed at KTB instant, so this will add, this final switch S3 will add B0 of T and BE of T to generate the original data stream D of T. Next part is signal space representation of MSK system. This is equation of S of T. हम लोगों ने already ये derive किया expression. Let us modify this equation. कैसे modify करना है देखो. ये जो CHT है, it is written at the beginning. Then this term is root 2PS, square root of 2PS. It is written like this, square root of PS TS into square root of 2 by TS. जैसे mathematically simplify करेंगे तो TS gets cancelled and you will be getting square root of 2PS, that is original term, into sin omega ht as it is. Same way second term is rearranged. CL of T sin omega lt as it is रखा है. ये जो term है root 2 square root of 2PS, it is written like this, square root of PS TS into square root of 2 by TS. Same logic, TS gets cancelled and you will be getting square root of 2PS. अब ये जो term है, let us denote it by orthogonal signal phi 1 of T. This term square root of 2 by TS sin omega lt, call it as second orthogonal signal phi 2 of T. अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, इस एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस पे phi 2 of T लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे phi 1 of T लिखेंगे. लुक एट दिस टेबल, एक टेबल तैयार करेंगे. CH और CL के अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे, 0 1 0 -1 1 0 -1 0. इसके लिए we want to write corresponding expression of S of T. How to write it? First combination, CH is 0, CL is 1. Look at this expression. CH 0 है, मतलब ये टर्म 0 into anything, this become 0, तो पहला टर्म वैनिश हो गया. CL का वैल्यू 1 है, so this term will be this is 1 into root PSTS into, मतलब ये ऐसे आएगा 1 into root PSTS into sin omega LT, और make it more simple, ये 1 into root PSTS as it is into phi 2 of T, where phi 2 of T is this entire term root 2 by TS sin omega LT. ये CH 0 और 1 का एक्शन हो गया. फिर CH 0 CL -1, सेम लॉजिक, ये इक्वेशन है. CH 0 मतलब पहला टर्म मैनिश हो गया. CL -1 मतलब सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -1. ये 1 है तो ऑप्शनल है लिखना. यू कैन राइट इट लाइक दिस, PSTS into phi 2 of T. थर्ड 1 0. अब CH1 है, ये वाला CH1 है, CL 0 है तो सिर्फ पहला टर्म आ जाएगा. CH1 है, सो इट इज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ PSTS phi 1 of T. Same way for the last term, CH is -1, CL is 0, so it is minus root PSTS phi 2 of T. So these are the values of S of T by considering different values of CH and CL. अब स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन और सिग्नल स्पेस रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कैसे करना है, जैसे हमने डिस्कस किया, एक्स एक्सिस पे phi 1 of T लिखेंगे, वाई एक्सिस पे phi 2 of T लिखेंगे. सपोज एक्स एक्सिस को हम लोग CH मानेंगे, वाई एक्सिस को CL कंसिडर करेंगे. सो पहला कॉम्बिनेशन देखो, ये जो पॉइंट है इट इज फॉर दिस पॉइंट CH इज 1, CL इज 0. इस एक्सिस पे CH कंसिडर कर रहे हैं, इस एक्सिस पे CL कंसिडर कर रहे हैं. सो दिस पॉइंट विल बी 1 0. सेम वे दिस पॉइंट विल बी CH 0, CL 1. दिस पॉइंट CH -1, CL 0. This point CH 0, CL -1. Likewise, we have marked 4 points. We know that distance between any 2 points, let us say distance of this point with respect to this point, is root PSTS. If I will consider this triangle, then this distance D is called Euclidean distance. How to calculate this distance D? Using simple mathematics. So distance D is square root of, this distance is square root of this side square plus this side square, and length of every side is root PSTS, so it is square root of
PSTS प्लस PSTS। देखो फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट वैनिश हो जाएगा, तो ये और ये स्क्वायर रूट में रखना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म स्क्वायर, सो इट बिकम स्क्वायर रूट ऑफ PSTS प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, अगेन लेंथ इज सेम, so it is same as square root of 2PSTS. Now TS is equals to, we know that TS is equals to 2TB. TS is the symbol time, TB is the bit duration. So if you put TS is equals to 2TB, therefore D can be written as square root of, देखो ये 2 ऑलरेडी है, TS का वैल्यू 2TB पुट करेंगे तो आएगा 4PSTB. Now PS into TB, this term, this particular term PS into TB is denoted by EB, that is bit energy. Therefore Euclidean distance is square root of 4EB, that is root 2 inside the bracket root EB. This is the equation of Euclidean distance. Now about power spectral density, that is PSD, it is same as power spectral density of QPSK system, जो हमने already learn किया है. So you can draw the same diagram, which is basically sync waveform, and only difference is that in this case, in case of MSK, bandwidth is 1.5 FB. So this is the equation of bandwidth. So dear students, that's it for today's session. So thanks a lot for watching this video.